تو اب ہم تنقید سے مبرہ ہو گئے. ابھی میر منصور نے جاوید جباب کے لیے کہا ایکس سینیٹر. تو مجھے سینیٹر مولا بخش چانڈیو نے ایک دفعہ جب وہ سینیٹ سے الگ ہوئے تھے تو میں نے کسی تقریب میں ان کو کہا ایکس سینیٹر مولا بخش چانڈیو. تو پھر مجھے کان پکڑ کے کہا کہ جیسے جنرل کبھی ریٹائر نہیں ہوتے اسی طرح سینیٹر بھی کبھی ریٹائر نہیں ہوتے. آپ کی تالیوں میں اپنے دوست اور استاد براڈ کاسٹر اور سینیٹر جاوید جبار جو کہ خلاف توقع خلاف پروٹوکول ہم انہیں بلا رہے ہیں, ان کو کسی اور تقریب میں بھی پہنچنا ہے. آپ کی تالیوں میں جناب جاوید جبار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ایوب شیخ صاحب, آپ نے جو تعارف کروایا. میں یقین دلاتا ہوں کسی اور تقریب میں نہیں, ایک بڑی اہم شخصیت سے مجھے ملنے جانا ہے, وہ ہے میری بیوی شبنم. اس کو میں انتظار نہیں کروا سکتا کسی حالت میں بھی. نور صاحب کے باوجود اس سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے, اور ڈیٹ ایک تو مقرر کرنا کسی لڑکی کے ساتھ, پھر ڈیٹ کو رکھنا اور ڈیٹ کو انجوائے کرنا. جانتے ہیں نا کہ ڈیٹ کا کیا مقصد ہے؟ ڈیٹنگ. تو ڈیٹنگ کا ایک خاص لطف ہوتا ہے ایوب شیخ صاحب. I strongly recommend it. So my date is waiting. But more importantly, this date is waiting. And MashaAllah, نندی صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے عزت بخشی. Very gracious in inviting me to be here with such distinguished company. روچی رام صاحب, محمد رانی صاحب, نصیب نور, رضالہ بی بی. واہ, ایک بیچاری بہادر دیکھیے لڑکی ہم سارے ظالم مردوں کے ساتھ اوپر بیٹھی ہے. اس کے لیے تو تالی ہونا خاص اکیلی. اور ادھر مشکل سے نور جان جی اتنا خطرناک شخص ہے کہ صرف 4 لڑکیوں نے ہمت کی ہے ادھر آنے کی. 3.5 بلکہ 2 ادھر بیٹھی ہیں, ایک وہاں تشریف رکھتی ہیں, اور ایک ماشاءاللہ کل کی خاتون ادھر. کیا بات ہے نور صاحب, آپ تو اتنے خوش مزاج آدمی ہیں, کیوں لڑکیاں آپ سے اتنا ڈرتی ہیں کہ بولی نہیں؟ اچھا نہیں, I'm sure this is a misunderstanding. بٹ جو معزز شخصیات یہاں موجود ہیں, اٹس اے پلیزر ٹو بی ہیئر اینڈ ٹو بگن بائی فیلیسیٹیٹنگ نور احمد جنجی صاحب آن ہز پبلیکیشن آن رائٹنگ and on producing 2 books. What an ambitious target he has set for himself. 2 books every year. And mashallah, how many years have you been able to maintain this commitment? Since last 5 years. Wow, zabardast, wow, bahut khoob. It shows the sincerity and depth of your interest in the varied subjects that you have addressed, both in the past and in the present. And the book opens with a very fine foreword by Gul Muhammad Imrani Sahab, because he sets the tone and he opens the door in a very appropriate way. Summarizes the great range of subjects that Nur Sahab has addressed in this collection of work, because clearly we are looking at an individual who combines the role of a writer, an educator in a large sense. A teacher is also an educator, but an educator has a much larger vision beyond the classroom. A teacher may be unduly concerned with his lessons, with his curriculum, with making sure he is conducting the class properly. But an educator has a vision beyond the classroom. An educator thinks of the total system in which he is teaching, the policies that are shaping the educational structure, and what can be done to improve it. So Nur Sahab is not only a teacher and a lecturer, but he is an educator in the finest sense of the term. And he is a historian, as the foreword so aptly points out, because in the very first chapter, I am very struck by the unusual title he has given it, Thoughts of Heart. Wow, wow, wow. I mean, normally the heart is associated with feelings, with emotion, with sentiments, with passion. But to associate thinking with the heart,
brings out the great connection, the basic natural connection between the mind and the heart. They can't be surgically separated because we are a singularity of experience and being. And you can't say this is where the mind stops and this is where the heart begins. And thoughts of heart, he remembers what a crucial influence his father played on his life by encouraging him, by inculcating his love of books. And then he pays such an apt tribute to his mother because he spotted somewhere an eagle pen being used by another young boy. And he then became a very spoiled boy by insisting, I will not eat, I will not drink until I also get an eagle pen. So his beautiful, lovely mother then arranged for a special person to go to Islam Court, and to get him an eagle pen. And mashallah, ever since Mood Sahab got that eagle pen, that eagle has been soaring up into the sky. Writing and reading. Because reading and writing go together. You can't be a good writer or a thoughtful writer unless you read. वो जो प्यास इनमें थी वो बचपन की, वो प्यास अभी तक बुझी नहीं. It's very clear. Because his writings reflect this rich range of knowledge and references to whether it is Shah Latif, whether it is Kabir, whether it is Shelley or Keats or T.S. Eliot, and seamlessly, ऐसा नहीं लगता कि जी ये एक तहजीब है और ये एक सकाफत है मगरिबी और ये एक सिंधी सकाफत है या ये मशरिकी, बिकॉज सकाफत के जैसे हम जानते हैं सरहदें नहीं होती अलावा ज़बान के या सेंसिबिलिटी के या जो geographical characteristics के. Culture is a total human experience, and those are brought out so well in his individual chapters, which I just want to quote about 5 of them. On page 20 to 24, for example, on Marvi and Modern Times, the great woman of Sindh, and how he points out कि वो जो उनकी कदरें थी, the values and the ideals that she represented of integrity, of determination, of love for the soil, wherever she came from, that mitti ki mohabbat, irreplaceable, imperishable. And those values endure. It's not just a tale from history, but it is a legend that is as relevant today in the 21st century as it was 700 years ago. Very beautifully brought out, Marvi and Modern Times. And the second one, which I want to refer to, is the War of Independence in Nagar Parkar. With great detail, he has narrated the different episodes that occurred in about roughly the 20 years of the mid-19th century. And Nagar Parkar, for which one also has a special affection and love. It is so distinct. It is part of Thar Parkar, and yet it has its own identity. And then he defines the 10 very different zones of Thar Parkar. लोग तो माशाल्लाह मुझ जैसे बड़े लाइल्म हैं. एक तो सिंध को सिंध समझते हैं बगैर रिकग्नाइजिंग कि सिंध के अंदर उसकी अपनी कितनी इनफरादियत है. हर इलाके की, हर नॉर्दर्न सिंध की, लर सिंध की, लोअर सिंध की, वेस्टर्न सिंध की, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इलाके में एक अपनायत और अपनी एक ख़ास शिनाख्त है. So the precise identification of those 10 distinct zones of Thar Parkar would be very instructive for someone who is not familiar with them. And then on page 124, wow, where I'm so ignorant, हम हमेशा सीखते हैं, अभी भी एहसास होता है कि कितना कम एक शख्स जानता है. मुझ जैसा लाइल्म मियाँ मोहम्मद बख्श की पोइट्री से तारुफ करवाया नूर साहब ने मुझे उनके चैप्टर में, where it's titled Only Love Prevails. And then very appropriately, I suppose, he concludes with
two very important chapters. One, the tale of two education systems, government education system, private sector education system, where he bewails what the current dichotomy between these two systems is producing. But साथ-साथ, as he well knows, it's not just two. We have multiple education systems. We have madrasas. अपनी दुनिया में माशाल्लाह मदरसे पैदा कर रहे हैं, एक खास कैफियत जो झरने में भी नजर आती है, उनके बोलने में भी नजर आती है, लेकिन दाद देनी चाहिए। क्या बात है पाकिस्तानी कौम की कि झरने जितने भी कर लो, मदरसे जितने भी बना लो, लेकिन 70 साल में 10 जनरल इलेक्शन में माशाल्लाह मजहबी सियासी जमातों को 8% से ज्यादा वोट कहीं नहीं मिला। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये पाकिस्तानी अवाम बेशक ना ख्वांदा हो, पढ़ना लिखना 50%, 60% ना जानते हो, लेकिन क्या शऊर है। और खासतौर पे सिंध के अवाम को तो मैं दाद देता हूँ। I mean, look at Sindh. It has produced always a larger vision. Not just अपनी सकाफत में बहुत फख्र है और जायज़ फख्र है. Proud of the identity of the Indus Valley civilization, but a much larger national, regional, global vision. So, education system के reform पे जो नूर साहब ने कहा है, really the madrasa system, the Cambridge O-level, A-level system, the metric system, English medium, Urdu medium, primary languages जो कि होनी चाहिए लाजिम basic mother tongue में, the tragedy of the splintered educational system, which is now to the credit of this government. हालांकि this government is earning so many discredits, but one credit is it is attempting to produce a national integrated curriculum depending on the approval by the 4 provinces, which is they are currently doing. एक draft curriculum बनाया गया है। गलती से उन्होंने मुझसे कुछ मशवरे मांगे थे, लेकिन जो अच्छी बातें उसमें होंगी वो सारी मेरी होंगी, जो बुरी बातें होंगी ऑब्वियसली किसी और की होंगी। So I will not take credit for anything. No, I have no role to play. But I'm just pointing out that's a commendable initiative, even if it is difficult to do and to get consensus. And lastly, Noor Saab concludes the book virtually with this extremely important chapter on the dropout rate caused by the sheer fact कि लड़कियों के पास मिडिल स्कूल्स नहीं है, और क्योंकि हमारी रिवायती सोच ये है कि भाई लड़की 5वीं जमात के बाद मर्द टीचर के सामने नहीं जाना चाहिए, मिक्स्ड क्लास में नहीं बैठना चाहिए। हालांकि many schools in rural and urban areas are not privy to that kind of restriction, but still one's experience shows that there are tens of thousands, if not millions of girls in Pakistan today who are deprived of secondary education, matric level education, only because there are no secondary and high schools for girls within a few kilometers of their village or their residence. This is such a tragedy, and therefore that figure of 20 million children out of school in today's Pakistan, which is an obscenity, it is a Jabbar, it's a badge of shame. He has pinpointed the great tragedy of the dropout rate. So I congratulate you, Noor Saab, once again on your achievement of maintaining your rate of writing, your speed of writing. And I think that the last thing that I want to say is his book highlights the need for intercultural communication within Sindh and within Pakistan. I mean, you are rightly a great and proud son of Sindh, but you are also an eminent and proud son of this country, Pakistan, and people living, whether they are in urban Sindh or Urdu-speaking Sindh or Pashto-speaking Sindh or whatever language they speak in the other parts of Pakistan, there should be greater awareness about your writing. And I hope that one day you are also able to produce a version in Urdu so that your audience is increased and your excellent message of humanism
and fraternity reaches the largest number of people. Thank you very much. All the best. जावेद जब्बार साहब के बारे में उनकी तकरीर पे दो बातें मुझे ज़हन में थी। एक तो ये थी कि अब भाभी की बददुआ मेरे नाम पे नहीं होगी और वो डेटिंग अपने उस पाए तकमील तक पहुंचेगी। दूसरी बात ये है, हालांकि मैंने उसको तकरीब का नाम दिया कि बात ढकी रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात आया रहे तो ठीक है। दूसरी बात ये की है उन्होंने कि आपने टर्मिनोलॉजी देखी जावेद जब्बार साहब की कि अर्बन सिंध, रूरल सिंध, नॉर्दर्न सिंध, वेस्टर्न सिंध, अपर सिंध। अब इसमें ये प्योर वो इस्तिलाह है जो इंग्लिश पीरियड से चले आते थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद कराची और सिंध, कराची और इंटीरियर सिंध और ये सारी जो खराबियां हैं वो पैदा हुई। आज चूँकि सेनेटर साहब भी बैठे हैं और उन्होंने इनको बिल्कुल साफ अल्फाज में बता भी दिया है, तो मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद इंटीरियर सिंध कभी न बोलें, क्योंकि जो इंटीरियर जिसका होता है उसका एक्सटीरियर भी होता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम इंटीरियर सिंध में सिंध के बाकी जो 20 अजला हैं उनके नाम आहिस्ता आहिस्ता एबंडन करते जा रहे हैं। हमें लाड़काना, दादू, सेवन, गोटकी, शिकारपुर, जैकबाद, थरपाकर, उमरकोट, इस तरह के ये ज़िले वो मुतारफ होनी चाहिए। हम चीचावतनी तो बोल सकते हैं, लिया और मुल्तान और लाला मूसा बोल सकते हैं, तो हम अपने ज़िलों के नाम लें। दूसरी बात मुझे ये करनी थी। तीसरी बात मुझे ये करनी है कि यहाँ बैठे हुए 80% लोगों से ज़्यादा जावेद जब्बार पूरी थरपारकर रीजन के हम सबसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं, और इसीलिए आपने देखा कि वो जैसे कराची को कराची कहते हैं और कराची नहीं कहते, इसी तरह वो नगर पारकर को नगर पारकर कहते हैं, इस्लाम कोट को इस्लाम कोट कहते हैं, और बिल्कुल साफ तलफ़्फ़ुज़ के साथ जो लफ्ज़ वहाँ मुरवज है वो यहाँ इन्हीं की ज़ुबान से हम यहाँ भी सुन सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि कई बरस जावेद जब्बार साहब जो है वो थरपारकर रीजन में काम करते रहे। बाबेली आपने सुना होगा।